പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 4 മണിവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദായനികുതി ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പിരിഞ്ഞത്. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങവേ സ്പീക്കർ ഇടപെട്ടു. I shall now put clause 300 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 300 is adopted. Clause 301 to 325 is 10 part of the bill. Those in favor of will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 301 to 325 are adopted. The enacting formula and the title is 10 part of the bill. Those in favor will please say aye. Please. आज 250 MPs एक मोर्चा मोर्चा का उद्देश्य ये था कि आज देश में जो वोटों की चोरी हो रही है और वो प्लीज सब्जेक्ट पर बोले, विषय पर प्लीज विषय पर बोले। मैंने आपको विषय पर बोलने के लिए अलाउ किया। संजय सिंह जी प्लीज, संजय सिंह जी प्लीज, संजय सिंह जी प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। आज 250 MPs को अरेस्ट करके प्लीज आपका विषय आ गया। पुलिस स्टेशन में प्लीज सिट डाउन। और ये सब्जेक्ट उठाई है सर, प्लीज नो, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। आपका विषय पर कोई बिल पर जो केवल लीडर ऑफ द हाउस की जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस बिल पर डिस्कशन हो रहा है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस विषय को उठा रहे हैं वो विषय इस समय इररिलेवेंट है। जी रिप्लाई सर, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in the last 11 years, our ministry, which has led to increased growth and development for the maritime and shipping sector, we are endeavoring to undertake reforms of other major laws governing the sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of our Honorable Prime Minister, India has emerged as one of the largest supplier of seafarers. So Merchant Shipping Act 1958 presently governs merchant shipping in India and implements certain International Maritime Organization convention. However, the present act is outdated, and since it doesn't provide for some of the critical obligations under international convention that have been adopted by India, the act is a bulky and fragmented legislation containing 561 sections. As a result of various amendments carried out from time to time, the act is no longer adequate to realize our developmental vision and address the contemporary challenges of maritime sector. Additionally, the 1958 Act prioritized regulation over enablement and as a result does not adequately represent the bankability of India as a maritime trade hub. Aligning the domestic law with international best practices and IMO convention leads to predictability in this transaction. Such alignment in turn enhances a country's bankability as a maritime jurisdiction. Therefore, enablement of increasing India's bankability in maritime sector is the core focus of this bill. Speaker, respected sir, the welfare and well-being of seafarers and the safety and security of ship would minimize this.